Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class students. I hope you all will be safe and sound at your homes. As you all know that we have completed our unit number 1, Know Your Computer. So today we are going to start the exercise of unit number 1. So students, open your computer books, page number 6, and the question number 1 of your exercise is fill in the blanks with suitable words. It means कि आपको कुछ words दिए गए हैं जिनमें से आपने अपना ब्लैंक से रिलेटेड वर्ड, सूटेबल वर्ड चूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है. सो नाउ ओपन योर कंप्यूटर बुक्स, पेज नंबर 6, and here you can see the question number 1, fill in the blanks, and here are some words given below. You have to choose the suitable word from these and put in the blank. So the blank number 1 is memory card used in smartphones are examples of dash storage devices. यानी मेमोरी कार्ड जो हैं वो कौन सी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर काउंट किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट द मेमोरी कार्ड कम्स अंडर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बिकॉज दे स्टोर्स डाटा परमानेंटली. और जब तक कि हम खुद से डाटा रिमूव ना करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर से डाटा रिमूव नहीं होता. सो मेमोरी कार्ड जो हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट किए जाते हैं. सो वी विल राइट हेयर सेकेंडरी. So memory cards are the secondary storage devices. The second blank is C++ is most likely to be used by a computer to design applications, right? यानी C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको आमतौर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर डैश यूज़ करते हैं. तो एज यू नो दैट applications are designed by the computer programmers. So here we will write the programmer word. Programmer. The blank number 3, MS Paint is a type of dash software. MS Paint जो है ये डैश टाइप का सॉफ्टवेयर है. यानी क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट MS Paint is a software that we used for painting our drawings. This is used for a specified purpose, so that's why it is called an application software. Right? So the next one blank is Windows Vista is a type of dash and is very common. Windows Vista जो है ये डैश की एक टाइप है एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी आम तौर पे यूज़ की जाती है. तो स्टूडेंट्स, एज द नेम shows that it's an operating system, right? Windows Vista is an operating system, so it will comes under system software, right? We will write here system software. So the last one, random access memory or RAM is a type of dash storage devices. रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जो है ये किस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर आता है. सो एज वी नो, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी
that is internally fixed in the CPU, and this is a read and write memory, and it's a type of primary storage devices, right? So we will write here the primary storage devices. So now students, we are going to move to the next question, which is choose and tick the correct option, right? There will be three or four options in front of you, and you will tick on the correct option, right? So here on the page number 6, this is the question number 2. Choose and tick the correct answer. The first one is Unix is a type of dash. Unix किस चीज़ की टाइप है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑप्शन डी secondary storage devices. So students, Unix is a type of operating system, so we will choose and tick on the option B, which is operating system. So the next one is we use MS PowerPoint to make presentations. हम MS PowerPoint को presentations बनाने के लिए यूज़ करते हैं. MS PowerPoint is an example of dash. MS PowerPoint dash की example है. An application software. Option B a system software. Option C a programming language, or option D an operating system. So as we have read here that MS PowerPoint is used to make the presentation which is a specific purpose, so it will be the type of application software, right? We will choose and tick on option A, application software. So move to the next. Software programs are different from computer hardwares because they, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हार्डवेयर से, कंप्यूटर के हार्डवेयर से क्यों डिफरेंट होते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ड, कैन नॉट बी यूज्ड बाय यूजर्स, डू नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर्स, और द लास्ट ऑप्शन डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स. So students, software programs are different from hardwares because they cannot be touched or felt. So we will choose on option A, right? And the next one is how is Mac OS similar to Windows Vista? यानी Mac OS और Windows Vista आपस में किस तरह से जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं या मैच करते हैं. दे आर बोथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं? इसलिए. दे आर बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्या ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? इसलिए. दे आर बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. क्या ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? इस वजह से. या आर द लास्ट वन ऑप्शन दे आर बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर ये दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर हैं. सो द राइट वन ऑप्शन इज़ they are both system software because these both programs are operating systems, so they are system software, so that's why they are similar to each other, right? So the last one point, PHP and Java can both be used to dash. PHP and Java जो हैं ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और ये दोनों किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन ए टू एक्सेस द इंटरनेट, ऑप्शन बी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, और ऑप्शन डी टू सॉल्व क्वेश्चंस. सो द राइट वन ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एज दीज टू आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर always use programming languages to design the different softwares. So we will choose and tick on the option B. So the next one question is identify the given devices as primary or secondary storage devices. Students, as this activity was assigned to you to do it by yourself during your
the reading of topic related topics, secondary storage devices and primary storage devices. And now we are going to attempt this activity here. So as you can see in column A, this is the first option, a DVD, and we have to label this option that either this is a primary storage device or a secondary storage device. So as we know that DVD is a type of secondary storage device because it stores data permanently, and it is a removable storage media, and it is an external storage device, right? So we will write here the type, which is secondary, right? Secondary storage device. So the next one is a RAM module, right? So this is the RAM or random access memory, which is an internal memory that is fixed in the central processing unit, and it stores data temporarily, and when we turn off or switched off the system or computer, the data stored on RAM will be lost. So this is a type of primary storage device, right? Primary storage device. So the next one is memory card. As we read that memory card is also a type of secondary storage device because it also stores data permanently, and in case the memory card is removed from the device, the data will not be lost. So it is the secondary storage device. So here this is the last one point, which is flash drive. This is also called the USB, and it's also the type of secondary storage device which use data permanently, right? Stores data permanently. So students, this was our exercise of unit number 1, and you have to do it by yourself on your computer books, textbooks, right? You have to fill the exercise on page number 6 and 7. Thank you so much, students, and have a great time.